Hi everyone, welcome to the fifth day analysis of CUET 2023 undergraduate exam. So 5 दिन निकल गए हैं and everything is going smoothly till now actually, except for some delays which we have heard of in the last couple of days. Otherwise more or less जो exam है वो बहुत smoothly जा रहा है. Students have not complained of any issues, technical difficulties so far. So this time, the experiences are much better for the students. The arrangements are much better, no doubt about that. And kudos to National Testing Agency for planning it out with so many students appearing for the examination. Almost 2 lakh people are taking the exam every day. So things have been well taken care of. Before I go ahead and talk about what happened today, today was also the day when the city intimation slip for the exams which are scheduled from 29th May till 2nd of June have been released. And so all those students were anxiously waiting, बहुत उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे, जो लोग आप लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा एग्जाम होगा. थोड़ा सा संकोच भी था मन में कि कहीं कोई इशू तो नहीं हो गया. सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. कुछ पेपर्स हो सकता है कि आपके 5th और 6th जून जो रिमेनिंग 2 डेज हैं CUET 2023 के, उस दिन भी कंडक्ट किए जाएं. बट फिलहाल के लिए 2 जून तक मैक्सिमम पेपर्स कवर करने की कोशिश है NTA की. Talking about 5th day, morning shift had English paper, the language paper, which is happening on every day. I discussed that about in the first impressions video today morning as well. So let me recap what exactly happened. And today was also the day when the commerce students had their papers starting from the first shift itself. So we had accountancy, business studies in the first shift today. Now, talking about English, the usual structure of the paper was there, what we have witnessed for the last 4 days. So, reading comprehension, 3 passages were there. One was based on Mahatma Gandhi, the other was a fiction passage, and third one was about teenagers working part-time. So altogether 15 questions, very direct. Overall, the feedback of the students was very clear. The language paper, English, was very, very easy. Synonym, antonyms, obviously we expect that to be there in the paper when it is about verbal ability. Here it is all about verbal ability. So words like disjure, forlorn were asked today. Model verb, fill in the blanks के तौर पे आए थे. Idioms, phrases भी आए थे. आज 2 क्वेश्चंस थे वहां पे. Sentence correction के कुछ 3-4 क्वेश्चन आए आज. Indirect speech, active voice, passive voice. जो फोकस है वो वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को लेकर के सेंटेंस के बीच में पूछे जा रहे हैं. रफली 8 क्वेश्चंस वे देयर टुडे एक्चुअली. एंड लेटर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सैल्यूटेशंस का यूसेज एंड ऑल. सो इंग्लिश इज स्लाइटली डिफरेंट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट इट हैज बीन वेरी मच consistent for the 5 days. It is very clear that if you have your exam coming in the exam happening in the coming days for the English paper, focus working more on the grammar. So that is something where maximum number of questions are. Moving on, we'll check out applied mathematics. Finally, applied mathematics का पेपर दिया बच्चों ने आज. Feedback like the core mathematics yesterday, very easy paper. We found no difficulties at all actually. If I look at the common compulsory topics, which is section A of mathematics, every topic had representation. So we had questions from matrices, we had questions from determinants, 3 questions each. We had questions from integration, differential equation का भी क्वेश्चन पूछा है, probability distributions के 3 क्वेश्चन थे, और लीनियर प्रोग्रामिंग के भी 2 क्वेश्चन आए. सो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे टॉपिक्स. सो किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया उन्होंने. And more or less was the same story for section B2, which is applied maths, which means the remaining 35 questions, out of which you have to leave 10 and you have to attempt only 25. Modular arithmetic पे 2 क्वेश्चन, congruent modulo पे 2 क्वेश्चन, alligation mixture का एक ही क्वेश्चन था आज. बोर्ड स्ट्रीम्स पे क्वेश्चन पूछे गए. पाइप एंड सिस्टर्न्स का आज क्वेश्चन नहीं था, जो बच्चों का फीडबैक था. रेसेस, गेम्स, पार्टनरशिप्स, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, मैट्रिसेस के फिर सेक्शन B2 में भी 4 क्वेश्चन थे. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करें जिसमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए.
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रहा, करीब करीब 5 क्वेश्चन से। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, वेरिएंस के ऊपर पूछा गया था, 5 नंबर दिए गए थे, वेरिएंस पूछा गया था, इंडेक्स नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, पॉपुलेशन सैंपल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए, रफली अराउंड 3 क्वेश्चंस थे, और लीनियर प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चंस। सो मोर और लेस इट इज लाइक you look at every topic has been given importance over here. There is no one particular topic in mathematics so far which has got unusual weightage, बहुत ज़्यादा high weightage नहीं है मैथमेटिक्स में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का, एंड दैट इज आई थिंक द स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड वेल, they have done well in the paper. So that was all about applied mathematics. Then from the commerce section we have feedback from accountancy and business studies. No economics today. So let's cover accountancy first. So accountancy में भी feedback बहुत easy रहा. Yes, I did got feedback from students from some locations. They were telling me that they got only 45 minutes. They did not raise that issue with the invigilator because according to National Testing Agency, if you go to the FAQ page, which is there on the official portal, which was last updated on 20th May, a day before the CUT examination started, it mentions that accountancy, along with 6 other papers, including GT, will be provided 60 minutes to solve actually. But but the couple of children who gave this feedback that they were given only 45 minutes is definitely surprising. If you at all face this issue, please bring this to the notice of invigilator, because NTA has specifically mentioned 7 subjects, which includes accountancy, physics, computer science, mathematics, general test paper. These papers will have 60 minutes for the students. Actually, they'll get 60 minutes. So please take care of this in case you face a similar issue for some reason or the other. Not sure whether it was actually the case or maybe something else happened. So let's look at accountancy paper for today. Almost uniform distribution. Yes, computerized accounting system, and this I remember clearly was the situation last year. This definitely got some weightage actually. So almost 8 questions were this from this particular unit of accountancy. Otherwise, 3 questions from accounting not for profit, accounting for partnership had 3 to 4 questions. Reconstitution of partnership के ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन आए थे. जो केस स्टडी थे वो 2 थे आज. एक था अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल और दूसरा था एडमिशन ऑफ पार्टनर. दोनों केस स्टडीज वे फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस ईच. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उसके ऊपर करीब करीब 4 क्वेश्चंस थे. अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, इस यूनिट की बात करें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑर्डर और सीक्वेंस के ऊपर, इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. ऑर्डर सीक्वेंस की जब हम बात करें तो सो न्यूमेरिकल्स अगर टोटल देखें इस सिनेरियो में, सो देयर वर ऑलमोस्ट 12 to 13 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई 60 minutes have been given to the students basically. Moving on to the next subject, which is business studies. I think a lot of students definitely enjoy learning business studies, and the feedback remains same like accountancy. It was an easy paper. So none of the paper except for the first few days when I talk about sciences, physics and chemistry, which students found to be moderate kind of difficulty level. Otherwise, the general feedback so far has been about all the papers that they are turning out to be very, very easy. I'm sure the reason for being paper easy is not just about the questions really being easy, but because you guys have worked really hard for this examination. You have prepared well for the examination. So you will definitely do well. बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चन थे. बिजनेस एनवायरनमेंट के कपल ऑफ क्वेश्चंस थे. Process of planning had 5 questions. Controlling के ऊपर almost 5 to 6 questions थे. Functions of controlling की अगर हम बात करें, organizing के ऊपर करीब करीब 5-6 questions थे. So planning, organizing, staffing, directing and controlling, ये जो 5 areas हैं, इनके ऊपर almost 20 to 22 questions आए थे आज पेपर में. So these areas must be covered actually. You, if you have your exam in the coming days, थोड़ा अच्छे से इनको रिवाइज कर लो. फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस फाइनेंस के ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस ईच थे.
मार्केटिंग के ऊपर 6 क्वेश्चन आए थे। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस की अगर हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो में तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस थे। केस स्टडी भी यहाँ पे 2 आया था। सो नॉर्मली डोमेन सब्जेक्ट्स विल हैव 2 केस स्टडीज, सो दैट्स हाउ द सिनेरियो हैज बीन. Moving on to the sciences for today, we do not have anything from humanities. I don't think there were papers as such today, maybe, but the feedback which we have received otherwise is for sciences. Physics पहले दिन मॉडरेटरी डिफिकल्ट लगा था लोगों को, और आज भी, कल थोड़ा आसान था पेपर, बट आज भी बच्चों का फीडबैक है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इजी टू मॉडरेट, बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेट किया है बच्चों ने. रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है जो पिछले दिनों में था, देयर इज नो चेंज आउट देयर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे. कैपेसिटर के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस पूछे गए. ऑप्टिक्स की बात करें तो डिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे. एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात करें तो लैम्डा के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, थोड़े इजी थे. सेमीकंडक्टर के ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस, एलईडी और सोलर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. डुअल नेचर ऑफ मैटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स थे जो स्टूडेंट्स को ट्रिकी लगा. 2 क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल बेस्ड थे जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ट्रिकी लगा एक्चुअली. Chemistry was easy to moderate, basically. So not so easy is what students felt today. So a change or deviation from the yesterday, if I talk about solid state, but एक चीज कॉमन रहा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक्स के ऊपर. सॉलिड स्टेट के 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशंस के 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ईएमएफ वैल्यू, रिड्यूसिंग पावर, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस आए. ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस था, केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे वहां पे. हाउ टू आइसोलेट अ मैटर, अगर आप आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले यूनिट की बात करें तो वहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए. पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे. डी एंड एफ ब्लॉक के ऊपर केस स्टडी आया था और बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर केस स्टडी आया था. दोनों मिलाकर के 8 क्वेश्चंस थे. नोमेनक्लेचर पूछा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. न्यूक्लियोफिलिक, अल्कोहल्स, फेनॉल्स और ईथर्स की बात करें. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए. एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन थे. सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के ऊपर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन थे. तो किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को वेटेज नहीं दिया जा रहा. तो जिन स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री पेपर है आने वाले दिनों में, please revise all the topics, give equal importance to each of the topics. But yes, I would definitely say, if I look at last 3 days including today, D and F block elements और जो आपका ये एल्डिहाइड्स वाला टॉपिक है, इनको थोड़ा अच्छे से कर लो. यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस ज्यादा रह रहे हैं. बायोलॉजी का पेपर आज हुआ, इजी था, डिफिकल्टी लेवल इजी माना बच्चों ने. रिप्रोडक्शन हैड दी क्वेश्चंस कमिंग आउट. मैक्सिमम फॉर्मेटोजेनेसिस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे. ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस थे. सिमिलरली इकोलॉजी के ऊपर 9 क्वेश्चंस थे, मेजरली प्लांट रिलेटेड ही था. मैच द फॉलोइंग पूछा गया ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर. ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन के थे और 6 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी के थे. So these were the major topics from where he had the questions on biology. So that was what all happened today on day 5 of CUET UG 2023. And the exam continues. Students will continue writing the examination. The only thing which I would like to mention here is, do not panic under any circumstances. कोई इशू नहीं है पेपर्स के अंदर. पेपर को लेकर के कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है. डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स वैरी करेगा, हर रोज नया पेपर होता है. यू विल हैव अ डिफरेंट डे, समबडी विल एल्स हैव अ डिफरेंट डे, डिफरेंट पेपर. एवरी डे इज अ न्यू डे. सो जस्ट मेंटेन योर calm composure during the examination, before the examination, and you will definitely do well in these papers. Actually, don't forget the fact that you have worked really hard. So I'll see you once again tomorrow evening with the day 6 analysis. We'll try to capture as many feedbacks as possible, like we are doing every day. Do come back if you have your examination, or if you have your examination in the coming days, to understand what happened on day 6. Till then, all the best.